Hello guys, this is Nishant, and in this video I'm going to unbox a mic that I have bought from Amazon.in, and so I'm going to unbox and review it how it works. So before going far, you have please do, if you are new on this channel, please hit the subscribe button and also do like of the you like the video and share and subscribe to your friends. So let's begin. Bring out the box from inside and see. This is the packaging, and you can see this is the Blusmart mic, and it is around 599 rupees there on Amazon, but actual price it has given that 950 rupees, as you can see here. Okay, let's see what are the contents that we get in this. So basically, if I find out what are the things that we have had. So first I get a clip on mic paper with instructions, feeds and functions and features, design, mini clip, and these are all the functionalities that even performance, package, etc. Let me check out on the other products that is available in it. So the basically this is the mic that has been given in inside it. Okay, I will check out the how it is about its voice will later, but before that, see, so are there any other products? So now finds nothing else. Okay, no, one thing is still available, and this are different types of connectors that is in it. So this, and it also has extra connectors we have had, and three RRS connector for jack and mouth sorry, voice covering. So let's check out this. If we talk about its size, it is around 5 feet according to what it has given. And now next shot is coming. अगला जो मैं शॉट दे रहा हूँ जो जैसे इसी का माइक वॉइस है, टेस्टिंग है, देखता हूँ कैसा, आप प्लीज़ देखें और बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा. So now this shot is from the mic I have bought Blusmart, and these are the products. Let me open it and find out what are the things given. So basically this reflectional for sound, and two extra connector for different um, connector jack, and obviously, and let me know how this voice is already recorded on Blusmart mic, and let me know in the comments whether the difference found before or the audio which has been recorded earlier from the earphone or this mic. And I also have tested and see whether it works or not actually. Okay, so I hope you like. सो गाइस, अब तक आपने जो बॉक्स का रिव्यू देखा है, उसके बाद मैं अपना व्यू देता हूँ कि क्या यह प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो दोस्तों, जब मैंने इस प्रोडक्ट को जब पर्सनली यूज किया तो पाया क्या कि इसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल माइक का जो यूज होना चाहिए, जैसे नॉइज कैंसलिंग के लिए या साउंड मॉडिफिकेशन के लिए, और ये सब में ये उतना हेल्पफुल नहीं है. हालांकि जब आप इसे माइक को अपने क्लोज में रखेंगे तो वह एक बेहतर वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही ये कुछ दूरी पे जाएगी तो वो माइक बिल्कुल ही वर्क नहीं करती है. इसका ये तथ्य मिलता है कि इसका मोबाइल का जो इंटरनल माइक है वही वर्क कर रहा होता है, वेदर जब हम उस माइक का यूज करते हैं या नॉर्मल माइक की वॉइस में भी किसी प्रकार की चेंज नहीं आ रही होती है. दोस्तों, यही था. मैं अभी उम्मीद करता आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. हम इस तरह के इंटरटेनिंग वीडियो अक्सर लाया करते हैं. धन्यवाद.